Assalamualaikum. This is Saifur, Rahman, Faculty of Physics at AMU, and today we are going to discuss the video solutions of 9th entrance examination, and I will be covering the physics and chemistry part of the paper. So we have our first question as question number 61, and it says that the dark brown and viscous crude oil with a characteristic foul smell is known as. कह रहा है डार्क ब्राउन और विस्कस क्रूड ऑयल. जो ये क्रूड ऑयल जो टर्म है हमारा, इस पे हमें फोकस करने की जरूरत है कि क्रूड ऑयल जैसे ही इसने कह दिया डीजल और पेट्रोल एलिमिनेट हो गया हमारा ऑप्शन, बिकॉज़ डीजल एंड पेट्रोल आर नॉट क्रूड ऑयल, दीज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. सो नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, पेट्रोलियम एंड केरोसिन. सो वी कैन कंक्लूड दैट केरोसिन इज एक्चुअली colorless, but it is made blue color by adding some pigments, by adding some other chemicals. So we have another option that is known as petroleum, so it is dark brown in color. So this will be the correct answer. Petroleum will be the correct answer, and the correct answer for question number 61 will be A, because it is dark brown and the foul smelling substance. Now we have question number 62. So as I had discussed in the class, question number 62 says that Zn displaces copper. Zn has displaced कॉपर. Zn ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है. इसका मतलब जिंक जो है वो जरूर ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा. जिंक अगर ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा तभी इसने कॉपर को आकर के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस किया होगा. तो ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन बी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. नाउ वी हैव question number 64. We have question number 64 from the science part, from the physics and chemistry part. It says that polymers are giant polygons which are made up of many repeating units called. Repeating units का नाम हमें बताना है. तो हम लोग जानते हैं कि मोनोमर्स जब बार-बार रिपीट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पॉलीमर्स. So correct option will be question number 64. Correct option will be A, monomers. We have some another options such as isomers, which are same molecular formula but different structural formula compound. Dimers are substances when two units of single unit are joined. Next is question number 66. So it says that acid rain is caused by chemical reaction that begins with compounds like dash and dash are released into the air. So ये पूछना चाह रहा है कि एसिड रेन किस-किस कंपाउंड के रिलीज होने से एसिड रेन होता है. तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, सॉक्स SOX एंड NOX. मतलब क्या है इसका? सॉक्स का मतलब है या तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाए, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाए. नॉक्स का मतलब है या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाए, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो जाए, या इस टाइप का कोई भी सब्सटेंस हो तो उसको हम लोग सॉक्स और नॉक्स कहते हैं. तो यहाँ पे जब हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो वी हैव ऑप्शन बी व्हिच सेज दैट सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. Now we have question number 69 from the physics part. Question number 69 says that safety device that works on heating effect of electric current is. So safety device कह रहा है कि कौन सा safety device है जो वर्क करता है heating effect of electric current पे. तो हम लोगों ने क्या किया, एक फ्यूज ड्रॉ किया है. यहाँ पे फ्यूज को जो ड्रॉ किया है, तो फ्यूज क्या होता है ना, उसमें एक वायर होता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है. मेल्टिंग पॉइंट इसकी कम होती है. ऐसा क्यों होता है कि जब भी करंट सर्किट में बढ़ेगा तो करंट के इंक्रीज होने से हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज कर जाती है. और जब हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो ये वायर क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है. मेल्टिंग पॉइंट कम है, हीट बढ़ गया, जब हीट बढ़ गया तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है. तो ये सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज किया जाता है क्योंकि सर्किट में जब करंट बढ़ेगी तो कहीं और पे आग ना लगे, इसीलिए सर्किट को हमें ब्रेक करने की जरूरत होती है. तो फ्यूज पहले ही क्या हो जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, करंट को रोक देता है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 70. Question number 70 says that a real image is formed when rays, option A is diverge, option B is converge. So ये बात हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि रियल इमेज कब फॉर्म होता है. तो रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज. रियल इमेज is formed by actual meeting of rays. जब रेज एक्चुअली में मीट करती है तो क्या बनता है, रियल इमेज. और रियल इमेज जो है तब बनेगा जब
करेंगी और एक्चुअली में रेस तब मीट करेंगी जब लेंस क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, कन्वर्जिंग रेज होगी, कॉनकेव मिरर एंड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, इसी दो केस में क्या होगा, हमारे पास रियल इमेज बनेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर भी रेज को कन्वर्ज करेगा और कन्वर्जिंग लेंस भी रेज को कन्वर्ज करेगा, और जब रेज कन्वर्ज होंगी तभी तो वो एक्चुअल मीट करेंगी, और जब एक्चुअल मीट करेंगी तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 70 विल बी ऑप्शन बी, एंड फॉर 69 the option is fused, option is C, option C is fused. Okay, now we have question number 71. Question number 71 from the chemistry part. The formula for sulfurous acid is, there are four options, so we need to know that there is a difference between sulfuric acid and sulfurous acid. Sulfuric acid is H2SO4 and sulfurous acid is H2SO3. You need to be very careful about that the first option given here is sulfuric acid, H2SO4. It is sulfuric acid and sulfurous acid is H2SO3. So correct option is here, it is sulfurous acid is in option D. So correct option will be answer D. Now question number 72. As I had already discussed that in constellation, जब मैं constellation पढ़ा रहा था तो मैंने डिस्कस किया था कि Ursa Major जो है उसको greater she bear कहते हैं। क्या कहते हैं? greater she bear, greater she bear, या फिर डायरेक्टली इसको greater bear भी कहते हैं, डायरेक्टली इसको greater bear भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन बी इज greater bear। तो Ursa Major को greater bear कह सकते हैं या फिर greater she bear कह सकते हैं। So now we have question number 73. Question number 73, it says that the pitch of a sound depends primarily on, pitch किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी है आपका साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड का मतलब है कि जो साउंड वेव है वो कितने साइकिल बना रही है एक सेकंड में, जितने साइकिल बनाएगी दैट इज फ्रीक्वेंसी। और पिच जो होता है, पिच इज अ मेजर ऑफ श्रिलनेस, पिच इज अ मेजर ऑफ श्रिलनेस, मेजर ऑफ श्रिलनेस, श्रिलनेस का मेजर है पिच, एंड पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा पिच होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज 73 इज बी, बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है पिच, तो पिच का ऑप्शन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अच्छा, पिच जो है वो फ्लैटनेस का इनवर्सली है। अगर फ्लैट ज्यादा वॉइस होगी तो पिच कम होगा, वॉइस अगर फ्लैट कम होगी तो पिच ज्यादा होगा। इसीलिए विमेन की आवाज फ्लैट कम होती है तो उनकी पिच ज्यादा होती है। Now we have the next question we have with us is question number 74, which says that the calorific value of hydrogen is about, hydrogen की calorific value पूछी गई है। So we have the calorific value of hydrogen is 150 kilojoule per gram, but the option here is in kilojoule per kg, so we will be converting it into kilograms. So it will be like 150 kilojoule by, you need to convert gram into kilogram, so we will be dividing it by 1000 kg, so it will be like 150 and this 30 kilojoule per kg. So this is the calorific value in the required unit which the question has said, and so the correct option will be B. Now we have next question with us. It says that sodium metabisulfite is used as, it was totally an informative type of question. Sodium metabisulfite is used as a food preservative, फूड को बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। केरोसिन में किसको डिप करके स्टोर करते हैं? द ऑप्शंस आर पोटेशियम, प्लैटिनम, फास्फोरस, लिथियम। सो वी नीड टू नो दैट since potassium is a very reactive element,
पोटेशियम इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। पोटेशियम चूंकि क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर सकता है। पोटेशियम कैन रिएक्ट विद मॉइस्चर, पोटेशियम रिएक्ट कर सकता है मॉइस्चर के साथ। जो रिएक्शन बनेगी वो कैसी होगी, तो पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर सकता है मॉइस्चर, तो रिएक्शन किस टाइप की हो जाएगी, K प्लस H2O, तो यहाँ पे बन जाएगा KOH प्लस H2। ये इस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। पोटेशियम मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस जो बनी है ये रिलीज हो जाएगी। तो since this hydrogen gas has been released and the reaction is exothermic, so the hydrogen gas can catch fire. Hydrogen gas can catch fire. H2 gas can catch fire. तो पोटेशियम को अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में रख दें, वो वहीं के H2O के साथ रिएक्ट करके आग लग जाएगा। इसीलिए उसको हम लोग किसमें डिप करते हैं, केरोसिन में डिप करते हैं। केरोसिन में डिप करते हैं क्योंकि केरोसिन के पास मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, तो केरोसिन में जब उसको डिप कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम सेव हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 76 इज ए। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 77, and it says that which gas is rapidly produced when elemental aluminum reacts with sodium hydroxide solution. So we need to know that aluminum has been reacted with sodium sodium hydroxide solution. So it is a very famous reaction. Sodium aluminate is formed here, and the formula for sodium aluminate is NaAlO2, and hydrogen gas gets liberated here. So question number 77 was asking which gas is rapidly produced when elemental aluminum reacts with sodium hydroxide solution. Elemental aluminum reacts with sodium hydroxide solution. Hydrogen gas is rapidly produced. So the correct option will be 77. Correct option will be option C, hydrogen. Now 78 is a bio part which has already been discussed by our bio faculty. Now we have question number 79. The device which will measure depth of sea is. Guys, you can see that we have here 4 types of equipments. First one is aquameter. So aquameter tells us about water quality data in real time. Tells us about water quality data. Water quality data in real time. वाटर की क्या क्वालिटी है इसका डेटा हमें कौन देता है, एक्वामीटर। जहां पे वाटर कंटीन्यूअस फ्लो कर रहा होगा और वहां पे हमें क्वालिटी चेकिंग की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्वामीटर से मेजर कर लेंगे वाटर की क्या क्वालिटी है इन रियल टाइम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फेदोमीटर, बिकॉज़ फेदोमीटर ये क्या करता है, यूजेस साउंड वेव। ये साउंड वेव को यूज करता है टू डिटेक्ट द डेप्थ। यूजेस साउंड वेव टू डिटेक्ट द डेप्थ को पता लगाने के लिए साउंड वेव को यूज करता है। और लैक्टोमीटर है तो वो प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए यूज करते हैं। लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए यूज करते हैं। फ्लक्स मीटर से मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। फ्लक्स मीटर से मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग मेजर करते हैं। So the next question I have with myself is question number 81. I will be discussing it in a few seconds. So question number 81 says that the water holding capacity. Question number 81 says that the water holding capacity is highest in. So it is obvious that the water holding capacity is highest in clayey soil. Clayey soil जो होता है उसमें water holding capacity highest होता है. So correct option is option number B. Now we have question number 82. It says that a force has option A magnitude, option B direction, option C both magnitude and direction. So as we already know that force is a vector quantity. चूंकि force vector quantity है, इसका मतलब इसके पास magnitude भी होगा, direction भी होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है तो ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, बिकॉज़ आई हैव नॉट मेंशन्ड बाय डायरेक्शन। किस डायरेक्शन पे मैंने उस पे फोर्स लगाया है ये मैंने नहीं बताया, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मुझे बताना होगा। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 82 विल बी ऑप्शन सी। नाउ आई हैव क्वेश्चन नंबर 83 विद मायसेल्फ। इट सेज दैट Question number 83 says that for a normal eye the near point is about. Normal eye के लिए near point क्या है? So it is obvious that 25 cm is the normal near point.
25 सेंटीमीटर इज द नॉर्मल नियर पॉइंट। इसका मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर तक अगर ऑब्जेक्ट है, अगर 25 सेंटीमीटर पे आपके आईज के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपको उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाहर अगर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट है आपके आई के सामने में तो उसको देखने में प्रॉब्लम होगी, उसको देखने में प्रॉब्लम होगी। सो नॉर्मल नियर आई पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। इट वाज ऑप्शन ए, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। We have question number 84 with us. It is a quite calculated type of question. It is asked that 1 light year is equal to. So light year क्या है? Light year वो distance है जो कि light travel करने में 1 साल लग जाता है लाइट को ट्रेवल करने में। तो हमारे पास फॉर्मूला है distance is equal to time into speed. Time into speed। हमारे पास ये फॉर्मूला है। टाइम कितना है हमारे पास? 1 साल। उसको अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये हमारे पास टाइम क्या आ गया? टाइम इन सेकंड। और स्पीड, स्पीड क्या होती है लाइट की? मीटर पर सेकंड में अगर हम निकालें तो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये टाइम इन सेकंड है आपका, ये इतना आ गया 3 into 10 to the power 8 meter per second. So when we are going to calculate it, we will get the answer as 9.46 into 10 to the power 15 meter. The correct option is option A. Option A. You should be careful about unit. Option here is in unit, unit is in meter, so that's why correct option is A. Now we have question number 85 with us. Question number 85 is the last question of physics and chemistry part. It says that the chemical name of baking soda is. Baking soda का chemical name क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं, इसको लिखते कैसे हैं? सोडियम Na बाइकार्बोनेट HCO3। HCO3। चूंकि यहाँ पे H है और CO3 है तो इसी को कभी-कभी कह देते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को कभी-कभी कह देते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर सेम थिंग। The option A says that calcium bicarbonate, which is entirely wrong answer because it is not telling us about sodium. And option B says that sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate. So option B is the correct option. And for 85 we have option D. So this was about the physics and chemistry portion of 9th entrance. The paper was quite good, and we are expecting for the cutoff to be low than the previous year. Let's hope what